Yesterday I saw some things, but from that I want to just know about Git configuration. Means how where is Git configurations files and Okay. actually what will be what are the content inside .git directory. Means where our objects are stored, what is the hashtag, Mhm. all that directory information. Mhm. See, first of all, .git is your kind of, I would say, whatever you are doing, right? It is tracking out there, right? So there is not only limited to only tag or this, right? Does a lot of other things. If you see, right, Git also limits the size of the repository that you have. Okay, for example, it whether right your size should go to more than 1 GB or not, right? How it will behave, right? So these are few things, right, that Git manage. Okay, and Git actually tag for example, if you are making changes, how Git diff is working, where from where right Git diff come to know that there are two states of file, right? The original state which is currently in work is this, and what is in the old state is in. So where is that everything goes? So this is getting hashed, right? And when you're seeing hashtag, your commit id is what your hashtag. So everything you're doing, right, that .git folder is right managing that, right? So that is the work of Git. Okay, that is not you, right, who is going to tweak. Yes, if you delete .git, what will happen? You will lost everything that you are right managing right in that repo. Your repository is blast when you do git initialization. It means it is creating .git folder. Okay, Vishal. And related to git configurations, so git you can say git config has already command I have shared, right, in the git beginners document. For example, if you install git in some of git client in some of the machine, and if you go for commit, it will right never allow you to commit unless you have configured your username email, right, which is one of the information it requires to track, right, which user is committing what. So git needs all those, right? And you can use git list config command, right, to list all the configuration, right, that your git have. Okay, and you can use git config help with the verbs. The verbs are nothing but, for example, you want to understand more about uh, uh, generally say git stash, or say git any git command, git diff, right? You can use git help also, right? So they have their own documentation, so they will lead you to that documentation page of git for the commands. Okay, Vishal. Yeah, okay, but Beside this, if you want to right get more into very technical aspect, right, how git internals are working, they what algorithm they are working on, right? There are a lot of things, right, in which they right work. So if you see the backend code of git, then there are a lot of other things that you will understand. For example, simple example, if you see, if you do merge rebase, right, they use right different algorithm within the code, right, how to right read from the history of the code, right, how to right manage the commits, right, in what order, right? So this is the algorithm, this is internal code which is abstract to us. Okay. and Deepak, another concept, another issue is that कि जिस टाइम पे हम लोकल डिपॉजिटरी पे काम करते हैं तो उस टाइम पे हम मास्टर टू मास्टर मर्जिंग पॉसिबल नहीं है, राइट? सी मास्टर टू मास्टर सिंकिंग पॉसिबल है, मर्जिंग नहीं है, ठीक है? मेन टू मेन सिंकिंग इन द सेंस, इफ से फॉर एग्जांपल यू हैव मर्ज्ड राइट समथिंग इन योर रिमोट फ्रॉम सम ब्रांच to your master, so your local master is not right in sync with the remote master, right? So obviously your master may be right bit ahead of right your local main or master. So only thing that you can do is right git fetch or git pull, right, being on that master, so you can sync your master with the remote master. That is the right way. That answer your question, right? ऑब्वियसली रिमोट का मास्टर पे आप कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपने जब पुल किया तो आपको रेपो में आपको वहां पे मेन्यू मिल गया, आपने अपना फीचर में काम किया और फीचर पुश कर दिया और बाकी सारे एक्टिविटी उधर राइट हुए. नाउ व्हाटएवर द लोकल कॉपी, राइट, इज एन आउटडेटेड कॉपी फॉर यू.
in a way or other way, right? Either you will, if you want to work on the same right repository or copy, you will do what, you will sync your copy, sync your local repository, so everything is in right good state. So obviously if you do git fetch or git pull, right, it will do the work for you. विशाल समझा मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, yes. Hello, sir. Rajiv here. Yes, Rajiv. So while reading about the Git, I saw the word that Git fork. Mm-hmm. So I don't understand. Yeah, so git fork is this. Say example, let me share my screen. So you people have to do a lot, right, when we will do Jenkins. So it is a UI facility also, right? You can use a command line, right, way of doing it. So fork is what you are basically taking or syncing, right, a copy, right, in your branch. So whatever commit I do, right, it will get synced to your copy of repo. So my screen is visible to everyone, first of all. Yes. Okay, let me pull it somewhere else. It's not okay. Then I will open a new tab. Okay, and I will go to my github.com, or I think I'm already in, right, in my GitHub. Now, if you see this is my one of the repositories, right? See, and if anyone, right, want to use this repo, right, make a kind of a copy, right, not clone, I would call, make a copy which is in sync. Whatever I am committing here, right, would also right received by him, right? Only that with your login. आप अपने GitHub login से जाके यहाँ पे देखो एक fork button है, Yes. right? If you click over here, right, you will get exact repository in your on, right, GitHub account, in your on account, right, basically you will get. So it is currently in Deepak 2717. You can go and search my account in right internet while you are logged in with your credentials, and just right click on fork. You will see a copy of this repo will right be in your right main repository. So obviously it will be synced, whatever I will committing, it will get synced to your changes. Now if you see, right, many people would be right doing some contribution, right, to me. If I might go to my original page, right, main page. So many people, right, are actually contributing. I will go to github.com the way I have logged in. So repositories, and we will see, right, many people are right contributing to this particular repository. Mm, 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 where? If I go from here to repositories, I want to go to some main page where you will see or overview, I think. Out of this, right, 555 people, right, many people are, yeah. So these are my comments, but there would be, right, certain activity, right, that will happen by someone else also. It's not saying. I will do what? I will go to github.com. So obviously forking is nothing. Yeah, here if you see, right, see Ajay Singh forked, right, this from my RP 4 hours ago. So he had taken. So Vishal has taken, Shubh has right forked, right. Many people had right forked recently, right, for doing something. See, Swapnil has right forked right long ago. Though he's my right long back student, right, two days ago he had forked this, right, to do certain right exercise on this particular repo. Similarly, many people, right, are right actually forking and using my repo and doing some right their own development. But if I do make a change, right, that change will get reflected to their respective right fork branch. That is the main right purpose of right using a fork. Uh, okay, sir. So how can we differentiate between that clone and this fork? So clone is not right sync. For that you need to do manual sync. ना क्लोन में जब करोगे और उसके बाद आउटडेटेड हो जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा Sync करना मैन्युअली। पड़ेगा. हाँ, लेकिन फोर्क में ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने फोर्क किया है तो ऑब्वियसली यू आर
related in terms of syncing, right, with me, my repo. Okay. Thanks. Yeah, means people are learning, and right, I really like it. Some good questions are coming. Any more questions, guys? Yes or no? If not, we can continue, right? Today we do not have, right, a very big session planned, right? So obviously we will complete our Git today, and right, we will stop. So I don't want to continue Python in between once, right, we are done with. So we will do a separate lecture, so we have good time for, right, completing or taking entire, right, Python session. So we will complete Git today. So today we will be more concentrating toward what the common mistakes that we do and how to come out of it, and the stash. This is our agenda. So let's jump into our repo. Okay. Sorry, my bad. Clear. We had created And this Deepak, yesterday you told squashing means combine multiple commit into single commit, right? squash. Yeah, Squashing. Okay. yeah. Okay. So say I'm in this repository, right? Let me check. No, this is not the repository. Repository is inside it. So Git workflow is right our repository. Okay. And say I'm in Git branch. Okay. So first of all, right, I will go to the main branch. Right, check out. I'm in release branch right now. Git check out to main branch. Okay. And let me write to a code, right, create a code, kelsey.py one, right, just for example, and right, making some change there. So for example, I am working on, right, a file called kelsey.py, and I will do an initial commit here, writing the code. Mm, okay. This is my code. I'm making a commit. Okay, मैंने ऐड कर दिया मेरे पास एक राइट कमिट है मेरे फाइल में, राइट, इसके ऊपर वी आर गोइंग टू डू आवर git log online. So you can see, right, adding kelsey.py is our today's very first commit. Now I had to create a feature on subtraction, right, and I want to do work on a separate branch. I cannot do that coding, right, in this branch as per the instruction, right. So sprint activity started, and I got a feature to work on. Say that is the subtraction feature, addition feature. So I created a branch to work on. Okay, so I did what, git checkout. So you can give any branch name, but see, I'm not switching, right. I just created a subtract branch. Okay, and I will not. So the first mistake that I'm going to do is what, I'm going to make a mistake where I will create a branch, but I will not move there because I forget that. Okay, so this is what I will do. So I will create a branch, not I will do a checkout. Checkout means what, branch should exist, right. So it would have given me, right, no branch with names of track has given. And this is how we create a branch locally.
So git branch subtract, I did this, right? My branch has been created, and if I do git branch, I can see the list of branch as usual. There are certain people Deepak pinging Okay, on group. okay, they are waiting. Yes, yes. Let me add them then. Okay, Harti, Mukul. Let me make a sound when people join in so that I am aware. Thank you. Uh, Basically, right, I created branch and you can see there is a subtract branch created. True? Okay. Now, the very first mistake that we are going to do now is, right, forget to code in the subtract branch and started coding in what? The main branch itself, right? So I started coding def sub x, y, and here, right, I wrote something. So obviously I wrote some code. Basically, I'm writing gibberish means, right, I'm writing some code, and when I save this code, right, I feel I didn't do a good coding and I want to start again, right, from the scratch, because I messed a few things here and there. I don't want, right, to work on that messed stage, right? See, the state is that I didn't added this file. I modified this file, but I have not added or taken this file to staging stage. So, but if you see in the cat kelsey.py, I have this gibberish code, right, bad code. So when I do git checkout our file, so now this checkout is not, right, switching to branch. This checkout is over a file. It means if you have not added kelsey.py and you have modified the file, it will take the content of file to the original index, or right at the where you started modifying the file. Okay. Now updated one path from the index. Okay. Now if I cat kelsey.py now, you will see, right, those code, right, which I have written is no more, right, present. So it means what? I can come out, right, in some situation where I did messed up and I don't know, right, what to do, right, whether I should start with the code I have done. And yes, you are in a that stage, or you are in a tracking stage basically, and when you do git checkout there, right, you go back to original state. So there is one more command that I will talk to you about, right, getting into original state, right, for everything. That is git checkout dash dash dot. Okay, so that will also take you, right, for each and everything. It is just about file, right, kelsey.py. I am doing checkout. So similarly, I can git checkout, right, everything in my current directory. So that I will also show you. Okay. Now, this is the first issue that, right, we resolved, right, in which some problem. Now, I, uh, I will do write code and write, but in the main branch, not in the subtract branch. So I will again do vi. Okay, and I will write a function. Okay, okay. So I write a good code, right, and I will add it also. So I finalize my code. So it looks good to me. So I am finalizing my code. Okay, and then I will do what? Git commit minus m, right? Okay, I committed it, but I did a mistake, right? What mistake I did? मेन ब्रांच पे नहीं किया है ना, मेन ब्रांच पे कर दिया। वो तो है ही, अभी एक गलती की है जस्ट कमिट करते वक्त। कमिट करते टाइम मल्टीप्लिकेशन दिया है। Yes. So this is In the right. file, it's subtract. This is something, right, I did wrong. Now if I do git log one line, you can see, right, there is a commit id there, right, for added multiply function, but I want to correct it. I want to, right, change it to right, added subtract function. So obviously there is a command, right, called amend, right, with the commit. So in git commit dash dash amend. Okay, and then minus m, that is our message, and we can correct that, right, added uh, subtract function.
ओके, सो ऑब्वियसली ये इमीडिएट कमिट को करेगा, जिस कमिट के ऊपर आप हो। आप पीछे के कमिट में आप जाके आपको कोई चेंज करना है, आपने 2-3 कमिट ऊपर कर दिए और बाद में आपको लगा नहीं मेरे को वो कमिट चेंज करना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू रीसेट एंड राइट गो टू दैट स्टेज टू डू दैट, राइट? दैट इज राइट, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू डू लॉट ऑफ एफर्ट आउट देयर। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे ये किया, बट एक ऑब्जर्वेशन है एंड आई वांट यू टू शो मी दैट ऑब्जर्वेशन। सो मैंने अभी ये सही किया, अभी मैं गिट लॉग ऑनलाइन करके चेक करता हूँ कि हाँ सही हुआ है कि नहीं। तो मैसेज तो सही आ गया, राइट? एडेड सब्ट्रैक्ट फंक्शन, बट डू यू सी एनी अदर डिफरेंस? Just commit ID changes. Commit Commit ID ID. has changed, right? So this is what happens, right, when you do amend. So amend is right another commit basically, but did we lose that commit F9099B1? That is not listed here, right? Yes. Yeah. So see, in Git, right, nothing is lost actually, right? That is the one of the best thing, right? The Git, how Git manages. If you use Git reflog, you will see, right, the history of that commit is also maintained. This one, right? So in case, right, you want to recover your code or right, recover this commit also, right? You can recover this, right, in a way that you have to reset to this particular, right, commit ID. So I will show you, or right, create a headless right branch using this commit ID to check out from to this branch. That we will do, right, in actual scenario where we have to do. But I just want to show you Git reflog audits everything. So whether you are doing rebase, merge, whatever, right? How, what Git reflog will see the sequence of movement that you are doing in your repository. It will capture each and every stuff. Okay. So and that's also right helpful in terms of sometime identifying what happened when. Okay. Now this is right, we have done right, amend कर दिया है, लेकिन अभी हमारी गलती तो अभी भी है, right? And then you realized, अरे shit, मैंने कोड कर दिया है मेन ब्रांच में, अब मुझे लेके जाना है इसको सब्ट्रैक्ट ब्रांच में। आई डोंट वांट टू कोड अगेन, राइट? आई हैव डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, राइट, कोडिंग इन दिस मेन ब्रांच। आई वांट माय कोड दैट आई हैव डन हियर to be there. So there is a concept called what, cherry picking. So cherry picking means, well, obviously, right, you are cherry picking what, the commit ID, right, on the branch what where you work, and using that commit ID you will take it to the other branch. Now I will check out to basically I would say the subtract branch, and this is the commit ID, right, that I want to apply there. So I will copy this, okay, and then I will get check out where subtract branch. Okay, here let's do a log. ओके, सो ऑब्वियसली calc.py से कट किया था तो वही है, तो कोड हमारे पास, हमारा कोड अभी है नहीं इसमें, राइट, रिटर्न। अब मुझे लाना है तो मैं क्या करूंगा, git, and that command is cherry dash pick, right? So git then cherry dash pick, okay, and then the commit ID, which commit ID that you want to write cherry pick from another branch. So I will paste it, okay, and so obviously it bring right that code to my right checked branch, which I am currently now, right? And if I cat kelsey.py here now, I will see my code right out here. And if I do git log one line again, right, you can see, right, we got that commit message also. But there is a one more observation. क्या है यहाँ पे भी, क्या है, commit ID डिफरेंट आएगा, है ना? क्योंकि आपने कमिट आईडी उठाया है बट यहाँ पे आप चेंज कर रहे हो, तो वो आपके लिए वो कमिट आईडी कमिट कर रहा है वो चेंजेस आपके लिए। तो आपने क्या किया, चेरी पिक किया ना, ब्रांच में तो आ गया, है ना, कोड आ गया मेरा। तो आई रिकवर्ड दिस सिचुएशन। नाउ योर मेन ब्रांच इज इन बैड स्टेट ना, है कि नहीं? क्यों है बैड स्टेट में, कोई बताएगा? ऑब्वियसली ऑब्वियस ना, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट फीचर का कोड होना ही नहीं चाहिए था, वहाँ पे वहाँ कोड पड़ा हुआ है that was not required there, right? And I by mistake I coded there, so I need to basically take it to the original state. तो मैं क्या करूँगा, git log one line करके देखूंगा मुझे कहाँ जाना है। तो what is our actual original state, जहाँ पे मुझे मूव करना है, यहाँ जाना है मुझे, करेक्ट? ये वाला कमिट चाहिए ही नहीं मुझे, 7062724 मेरे मेन ब्रांच में।
करेक्ट और नॉट? Yes. तो इसके लिए क्या कमांड है? अगर मुझे पुराने प्रीवियस कमिट पे जाना है तो there is command called Reset. reset. रिसेट कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। अब वही हमें यहाँ पे समझना है अभी एक एक करके। तो एक होता है मिक्स रिसेट, एक होता है सॉफ्ट रिसेट और एक होता है हार्ड रिसेट। ठीक है। नाउ सॉफ्ट रिसेट इज व्हाट? when you reset using soft flag you will not lose the code. जो कोड है ना, जो लिखा हुआ है हमने सबट्रैक्ट का, वो कोड आप लूज नहीं करोगे। and the stage of that code would be in staging stage, means you can directly commit that code. And when you will do that, when you are very unsure, आपको आना तो है previous state पे, but आपको कोड भी लूज नहीं करना है। तो very right kind of a confused state I would say rather, कि भाई रिसेट भी करना है और कोड भी चाहिए। अगर कोड चाहिए आपको तो ऑब्वियसली वही कमिट आईडी पे रहो और चेंज करो। अगर आपको वहाँ कोड लेके आना है और कुछ इसमें चेंज करना है, ठीक है आप करो। but soft is very confused state of a developer where he will use it generally, but there could be many reasons where he will improve on the same commit id. That is the reason he wants that and want to get rid of that commit. तो obviously थोड़ा सा कंफ्यूज्ड स्टेट है, बट रिमेंबर यहाँ पे मैंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की है कि स्टेजिंग स्टेज पे लेकर आता है, तो मतलब रेडी टू कमिट में। दैट इज व्हाट्स द डिफरेंस इट विल मेक। सो लेट्स डू फर्स्ट सॉफ्ट रिसेट। सो गेट रिसेट with a flag called dash dash soft, and this is the commit id that I need to copy. यहाँ पे मुझे जाना है, मैंने इसको पेस्ट किया। सबसे पहले अगर आप git status देखोगे, एक इसमें modified kelsey.py मिला है फाइल अपने को, जबकि वो committed state में था वहाँ पे, है ना 706 में। और यहाँ पे वो modified में है, और kelsey.py में मेरा कोड देखोगे तो वो पड़ा हुआ है, subtract का कोड अभी भी है। मतलब I am in a staging stage and file is in modified state. This is one thing. नाउ अगर मैं मिक्स रिसेट करूं सेम इस पे, तो ये सॉफ्ट हटा के मैं मिक्स रिसेट करता दीपक, हूँ। ये कमांड होने से पहले एक बार git log कमांड एग्जीक्यूट करो ना प्लीज। श्योर श्योर। ओके, करेक्ट। अभी हमारा जो इसका मतलब हमारा जो हेड है वो मूव हो गया है एडिंग पे, राइट? ऑब्वियसली हाँ, that's what रिसेट मींस लेकर आ गया यहाँ पे, Yeah. and thank you for executing making execute this command, because this will clear why we did reset ना। reset मतलब क्या, हमें उस कमिट से हट के इस कमिट पे आना चाहिए। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू डू अ मिक्स रिसेट। सो मिक्स रिसेट में क्या, कोई फ्लैग नहीं लगता, सिंपल रिसेट कमांड गेट रिसेट एंड व्हाट द कमिट आईडी जिसमें मुझे जाना है, मुझे इसी कमिट आईडी पे जाना है ना। तो अभी तक मेरा कमिट उमिट नहीं किया, तो आई कैन रन मल्टीपल टाइम रिसेट कमांड ऑन द सेम। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, अभी मैं रिसेट कर रहा हूँ। ठीक है। अभी आप देखोगे जो आपका चेंज जो स्टेज में है वो किस स्टेज में आ गया, ट्रैकिंग स्टेज में। मिक्स रिसेट में क्या बोलता है, ठीक है मैं कोड तो लेकर आऊंगा, ये भी कोड लेकर आएगा, बट आपको स्टेजिंग स्टेज में नहीं रखेगा आपके चेंजेस को। आपको कहाँ पे रखेगा, वो ट्रैकिंग स्टेज में रखेगा, कि आपको पहले ऐड करना पड़ेगा वो सारे चेंजेस और उसके बाद आप कमिट कर पाओ। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मॉडिफाइड आ रहा है, और गिट स्टेटस देखोगे तो क्या आ रहा है, चेंजेस नॉट स्टेज फॉर कमिट। वहाँ पे डायरेक्टली कमिट के लिए था, यहाँ पे क्या है, इट इज इन मॉडिफाइड स्टेट दो, बट इट इज नॉट इन द स्टेजिंग स्टेज, इट इज इन ट्रैकिंग स्टेज। तो आपको पहले गेट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके फिर कमिट करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या कोड इंटैक्ट है, यहाँ पे भी कोड आपने लूज नहीं किया जब आप मिक्स रिसेट करते हो। ठीक है। नाउ व्हेन यू डोंट वांट द कोड एवरीथिंग यू वांट टू बी क्लीन, मतलब आप चाहते हो कि नहीं मैं जिस स्टेट पे मैं था उसी स्टेट पे आऊं, मेरे को कोई कोड नहीं चाहिए जो मैंने उस कमिट के लिए किया था, देन यू शुड डू हार्ड रिसेट। अब अगर मैं गेट रिसेट हार्ड मारूंगा इस पे, ठीक है, अभी कमिट जो गिट लॉग ऑनलाइन देखोगे तो सेम ही रहेगा, ऊपर का वही कमिट रहेगा जिसपे हम लोग हैं। ठीक है। git reset dash dash hard enter। now head is now at this set, this is a hard reset। तो उसने बोला कि अभी मैंने 6a जिस स्टेट में 6a 9 7 8 8 b में आप थे, मैं उस स्टेट पे लेकर आ गया हूँ। now if you do git status वर्किंग ट्री क्लीन होगा, कोई मॉडिफाइड स्टेज ये सब नहीं है। और अगर आप cat kelsey.py करोगे तो you will not see the code also। You got the difference between these three resets? Uh,
जी, सॉफ्ट रिसेट में मतलब कोड भी रहता है और मिक्स में बट स्टेजिंग एरिया में जाता है वो, राइट? करेक्ट और मिक्स करेक्ट में वो ट्रैक स्टेज में जाता है, मतलब ऐड करना पड़ता है और फिर ये करना पड़ता है। हाँ यस करेक्ट राइट so you have to use it judiciously right when you are not sure कि भाई जो कोड इतनी मेहनत से लिखा है right वो लूज ना हो तो it's better right to use mix reset right सॉफ्ट रिसेट भी कर सकते हो बट सॉफ्ट रिसेट इज मोर लाइक फिर से उधर लाके एक नया कमिट करना राइट या उस कमिट के ऊपर नया चेंजेस जो चेंजेस लेकर उसमें नया चेंजेस और करके फिर से मॉडिफाई किया फाइल को और उसके बाद राइट कमिट किया तो डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन right where you are in while right using this reset command but generally right if there is something very wrong you will generally use hard reset to move to original state ठीक है मीन्स लेकिन दीपक, जब हम सॉफ्ट रिसेट और मिक्स रिसेट करते हैं तो उस टाइम पे हमारा कोड लूज नहीं होता है, लेकिन जो फाइल है, सॉफ्ट वाली फाइल जो हमारी जाती है वो मॉडिफाइड स्टेट में जाती है यानी स्टेजिंग एरिया में, और जो अपना मिक्स रिसेट में हमारा जो फाइल है वो ट्रैकिंग स्टेज में जाता है। लेकिन जब हम हार्ड रिसेट करते हैं उस टाइम पे हमारा कोड टोटली लॉस होता है, करेक्ट? करेक्ट राइट ओके नाउ आई वांट टू से राइट अभी मैंने क्या किया ऐसा सिचुएशन हुआ एंड सडनली आई हैव टू टेक दिस डिसीजन कि भाई मुझे रिसेट करना है और हार्ड रिसेट करना है ठीक है एंड सडनली आई केम टू नो नहीं आई डिड व्हेन आई डिड हार्ड रिसेट आई डिड रॉन्ग एक्चुअली मुझे नहीं करना था राइट बट आपने हार्ड रिसेट मार रखा है तो नाउ हाउ यू आर गोइंग टू रिकवर दैट कोड तो अभी तो हार्ड रिसेट में कोड चला गया राइट अभी मेरा तो अभी मैं कैसे रिकवर करूंगा जो कोड मैंने लिखा था सबट्रैक्ट का यहाँ पे राइट नाउ दिस इज द सिचुएशन एनी आइडिया फ्रॉम फिजिकल डायरेक्टरी? नो फिजिकल डायरेक्टरी में तो अब नहीं है फिजिकल डायरेक्टरी में गिट रेफलॉग करके वो कमिट पे खुद से रिसेट करना। करेक्ट हाँ तो गिट रेफलॉग में जाना है अपने को कौन सा कमिट आईडी पे हमने रिसेट किया था ये वाला हमने लूज किया राइट ये वाला चाहिए अपने को है ना इसको कॉपी करना है दिस इज लाइक ग्रेट रिकवरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सिचुएशन सो गिट चेकआउट मारो इस कमिट आईडी पे डायरेक्टली ये कमिट आईडी पड़ी हुई है हिस्ट्री इंटैक्ट है राइट आपको लॉग में नहीं दिख रहा है बट रेफलॉग में दिखेगा पेस्ट करो राइट गिट चेकआउट ये आईडी डाला मैंने तो ये इसने क्या किया है एक डिटेस्ट राइट ब्रांच क्रिएट किया है जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है जब भी मैं उसे बाहर आऊंगा तो वो हट जाएगा बट आई विल गेट माई कोड अभी अगर मैं गिट ब्रांच करूंगा तो आपको दिखेगा एक डिटेस्ट ब्रांच बना हुआ है राइट तो हेड इज डिटैच्ड एट दिस राइट ये कमिट आईडी पे लिया है अभी यहाँ पे मैं calc.py को देखूंगा तो मेरा कोड है इसमें है ना यस और नो आगे रिकवर हुआ है ये राइट लेकिन यस। अभी तक ये ब्रांच डिटैच में है अगर मैं ऐसे बाहर निकलूंगा तो अगेन राइट आई विल बी राइट so I will do what I will create a branch from here so I will create checkout minus b backup अभी अगर मैं git branch करूंगा तो I'm in backup branch and I have my all those code changes intact here right मेन ब्रांच में तो नहीं है बट मैंने बैकअप पे वो लेकर आ गया एंड as per my right decision I will merge it with what my main branch to get my code back understood और ये वो कमिट आईडी से लेकर हम मतलब डिटैच ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं क्या, अगर बैकअप लेना है तो? यस यस वही हुआ देखो अगर अब हमने यहाँ पे जब गिट ब्रांच किया था तो आप देख रहे होगे ये हैड डिटैच्ड एट दिस कमिट आईडी है ना ये किस तरह का ब्रांच यस। बना उसमें हमारा कोड मिल गया राइट एंड देन वी राइट कट अ ब्रांच आउट ऑफ इट टू गिव इट अ नेम है ना उसको एक ब्रांच बना यस। दिया एंड राइट इन ब्रांच वी हैव द राइट code that we lost and then right we can write merge so that we will have our code in the actual branch where we want okay okay now there could be a situation कि आपने गलती से आप अपने ब्रांच पे काम कर रहे हो ठीक है और कोई जिप फाइल आई और आपको पता नहीं कि आप रैपो में हो और आपने राइट इन्फ्लेट कर दिया उस जिप फाइल को हो सकता है राइट दिस इज वेरी वैलिड सिनेरियो तो उस डिफ्लेट ने क्या किया थाउजेंड ऑफ फाइल्स एंड थाउजेंड ऑफ डायरेक्टरीज क्रिएट कर दिए मतलब वो जिप फाइल ऐसा था बहुत सारे उसमें राइट फाइल्स थे ना अभी आप उसको क्लीन करने जाओगे तो कैसे जाओगे
अगर आप मैनुअली करोगे 1000 फाइल्स को तो बहुत टाइम लग जाएगा, करेक्ट? यस और नो? दीपक एक क्वेश्चन था, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ओके, या मैं ये पूछ रहा था, चेरी पिकिंग एज अ रीस्टोर यूज नहीं कर सकते हम? सी चेरी पिकिंग आई थिंक एग्जिस्टेड ब्रांच के कोड पे रहा तो कर सकते हैं। आई हैव नेवर ट्राइड कि जिस कमांड पे रीसेट कर दिया है और रेफलॉग से उठा के चेरी पिक किया है। वी कैन ट्राई दैट। सो फॉर एग्जांपल लेट्स डू दैट। ओके, सो इन मेन ब्रांच में अभी वो कोड नहीं है ना? ठीक है, मेन ब्रांच में कोड नहीं, हमने तो बैकअप में लिया है। लेट्स ट्राई दैट। गुड थॉट, बट आई डोंट फील कि वो, पता नहीं, उसमें मेरे को ऐसा डाउट इसलिए है कि इस वो ब्रांच से ऐसा करते हैं, बट अगर हमारे पास कमिट आईडी है तो हाई चांसेस है होना भी चाहिए, राइट? लेट्स डू दैट। गिट चेकआउट टू मेन, ठीक है, मेन पे आ गए। कैट kelsey.py इसमें है नहीं। गिट cherry dash pick, let's do this. Yes, it's working. We can do that. Okay, हमें कमिट आईडी पता तो हम चेरी पिक करके भी लेकर आ सकते हैं डायरेक्टली। गुड थॉट। ओके, सो सी this can also be done. Okay, great. Now I was talking about that situation. Can tell me anyone कैसे हम उस सिचुएशन से राइट निकलेंगे अगर ऐसा हो गया आपके रैपो में? ये नहीं बोलना कि वो डायरेक्टरी पूरा डिलीट कर देंगे, पूरा रैपो ही डिलीट कर देंगे, नया रैपो क्लोन कर लेंगे, नहीं करना है वैसा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब आप जब आप डिफ्लेट करोगे ऐसे राइट टार फाइल्स को, तो जो फाइल बनेंगे वो किस स्टेज में होंगे? ट्रैक्ड में होंगे, अनट्रैक्ड में होंगे, स्टेजिंग में होंगे, किस में होंगे? Untracked होंगे, right? So obviously we can clean untracked file using a command called git clean. Okay, now let's take an example. I am going to touch some multiple right files, say t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, and similarly I'm going to create some multiple directory. So generally directory initially will not be treated, मतलब दिखाएगा नहीं right untagged में, but right they are also existing. So mkdir say d1, d2, d3, d4, but they are also existing, right, because of that deflating of zip file or tar file, right? This situation can come d7, d8 and d9. ठीक है, अभी मैं अगर ls minus ltr करूंगा तो I have write many t1 files and d files, right? And if I do git status, it is showing me right these all untracked files but not right tracking files. Okay, but there are untracked directories also. Now if I want to clean them, so there is a command called what? Git clean -d for what? Directories which are in untracked stage, and f means file which are in right untracked stage. So I can use -df option with clean, and if I do that, it will do what? It will remove right all those untracked files. So obviously exactly after extracting, right, you can run right git clean -df to get into right clean state again, right where you were. तो ऐसी गलती होने पे ये कमांड काम आ जाएगा आपको अनट्रैक्ड फाइल्स जितने बने हैं उनको रिमूव करने के लिए. Now if I do ls minus ltr, right, I can see right those file has been removed and I can move ahead. Got it? This is also right come handy and useful right in many aspects. Okay, now I will jump into our last topic of the day. Okay, that is stashing. So can anyone tell me uh, any idea right where stash could be useful, or anyone who have used stash can right tell me right where you have used it? Anyone? Any idea? No? Okay. So then I will move ahead. I will give you a situation and you have to answer me, right? How you will resolve that. Okay. So मतलब इंटरव्यू में भी ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन जिस तरीके से मैं आपको आउटलाइन कर रहा हूँ.
Uh, I say I'm a developer, right? And I'm working with an architect, and he has given me a feature, right? In one of the project, in one of the product, right? I have to inbuild that particular feature. So he explained me all the things that need to be built right for that feature, and I started developing. And while developing, right, I identified that it can be do right in different ways. So there are different algorithms to solve them. Okay, and all of those algorithms looks good to me, and I want to code them. And but I want to get it reviewed of my thoughts of this algorithm to architect. So but somehow architect is on leave, right, at least for 3-4 days, and I want to code also, right? So I have those ideas and I can code. I want to implement all the 4 algorithms right in my code, and I want to get it reviewed from my architect when he comes. So what should I do in such situation to write 4 different code for a single feature? This is a problem statement, right? Kind of a situation. Anyone have any thought? क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन पे? हर एल्गोरिदम के लिए क्या करें? So answer it should not be like this कि हम हर फीचर के लिए एक अलग-अलग ब्रांच बनाएं. Right? So अगर आप ब्रांच बनाओगे, right, obviously you are right creating a lot of resources which can be done right within a single branch, and there right git stash comes in picture. Okay, so this is one of the use case right that where right stash can be very useful. So basically what is stash? Stash is something right saving your work in memory right inside a branch, and can be applied right managed right within that branch, right? So let's do that. So for example, let me move to subtract branch. Let's check out. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इन गुड स्टेटस. गिट स्टेटस देखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक है इधर. हाँ ठीक है. मैं गिट चेकआउट फीचर ब्रांच में गया. ओके, नाउ मैं यहाँ पे एक कोड लिख रहा हूँ जो मेरा पहला थॉट प्रोसेस है राइट. तो मैं वो लिख रहा हूँ. तो वी आई से lc.py और मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि आई एम जस्ट राइट मिमिकिंग. सो why not portrait x plus y in bracket? This is say my first thought, right? Rather than returning right like this, I will use it, enclose my right sum in round bracket. Okay. So this right, I change something in my code, right? And now currently I'm working in right a branch, and I have to add multiple solution in that branch. So I will do whatever I have written, I will stash it using what git stash save, and I can give the name, right? So say added round brackets. So some meaning, some identifier, right? Right while saving. Okay. Now this stash has been saved right in the same branch itself, and I can check right how it is saved using what git stash list. So now this is right the address of what I change. Now if I check my code now, अगर मैं देखता हूँ ये कोड को, अभी क्या है, राउंड ब्रैकेट नहीं है राइट. जैसे ही मैंने स्टैश सेव किया, मैं अपने ओरिजिनल स्टेट पे चला गया राइट. बट जो ये स्टैश है, ये जो स्टैश एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है राइट, इसमें क्या है, वो राउंड ब्रैकेट है अभी भी, मतलब मेरे पास वो कोड पड़ा हुआ है. ठीक है. सिमिलर आई कैन ऐड राइट मल्टीपल कोड. और जो ये स्टैश जब आप मल्टीपल ऐड करते हो, ये किस तरह का ऑपरेशन पे चलता है, स्टैक ऑपरेशन पे चलता है. यू गॉट मी राइट. स्टैक में क्या होता है, 2 तरह के ऑपरेशन हो सकते हैं, लीफो एंड फीफो, है ना. तो अभी जो ये ऑपरेशन है, इसमें क्या होगा, जब भी मैं नया स्टेज सेव करूंगा, तो ये वाला जो स्टेज का एड्रेस है 0 से कहाँ हो जाएगा, 1 पे चले जाएगा, और जो नया वाला आएगा वो किस पे आ जाएगा, 0 पे, टॉप पे आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली इसमें मैं पॉप ऑपरेशन कर सकता हूँ स्टैश में पॉप. तो मतलब कौन सा जाएगा, सबसे ऊपर वाला जो सबसे लेटेस्ट में आपने स्टैश सेव किया है, वो क्या होगा, जाएगा. तो किस तरह का हुआ, लीफो हुआ या फीफो हुआ, LIFO hoga, right? Last in First first out, out. and whatever you have right committed in last, right, that will. Yeah.
So this is the right algorithm that stash uses. Now let's do again another change. So for example, my second second algorithm that I want to say, I want to add third variable to it, and I will write return x plus yz, right? So this is my again a code. I saved it, okay, and I will git stash save, say added third variable, okay. Okay, and say I do git stash list, दिख रहा है आपको, राइट? राउंड ब्रैकेट किस पे चला गया, 1 पे चला गया, राइट? और 0 पे आ गया जो मेरा अभी लेटेस्ट जो स्टेज सेव किया था. एक और कर डालते हैं, ठीक है. अभी मेरा कोड देखोगे तो अभी मैं ओरिजिनल स्टेट पे हूँ calc.py, ठीक है. एंड देन vi calc.py किया और मैं इंसर्ट करता हूँ. इस बार मैं क्या करूँगा, y plus x कर दूंगा. Okay. And I will git stash save, so reversed variable, reversed x and y. X and y. Now मैं इसको सेव कर देता हूँ. And now if I see how many stashes I have 3 stashes, ना? ठीक है. Now as per our right understanding, right, as per our problem situation now, right, my architect came in and I want to show him what I did, and I want my address to also be keep intact. So there is a command called apply. So I can fetch any address and apply so that I can show him. So I say I want to show him third variable one changes, right? So I will do what, git stash apply, and I will pick this address from the list, right, which I want to show him. So I will want to start with this. So say I copied it and pasted it. Okay, so see, I went into another state of the file, right, which is in now modified state. So git, which is in tracking stage in some context, right, when I am applying. So you can see, right, I have that code now, right, which I showed him, and he said, okay, now I want to show you another code. But while showing another code, you should not directly do git stash apply stash at the rate 0, because you are not in your original state of the code, right? If you want to go to the original state of the code, this is where I was saying, right, git checkout dash dash dot. Now if you see, right, now cat calc.py, I am in my original state from my stash. मेमोरी एड्रेस से बाहर आ गया हूँ, राइट, और अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ गया. अगर मेरे को कंटिन्यू करना होता तो मैं वहीं से क्या करता, गिट ऐड कर देता. तो ऑब्वियसली आई विल saying that now that stash is my master or master code or main code, right, on which I want to work. Similar, now I can apply for any other stash. अभी मेरे को अगर सेकंड वाला जो पहला चेंज है वो दिखाना है, राइट, तो मैंने इस तरीके से किया, cat calc.py, राइट, राउंड ब्रैकेट वाला चेंज आ गया, ठीक है. एंड अगेन आई विल गेट चेकआउट से. सो अप्लाई से हम स्पेसिफिक स्टैशेस उठा के दिखा सकते हैं, राइट. दैट इज द apply command, which is very useful out there. Now since it's a stack, we can do certain kind of pop operation also. So there is a git stash pop, but pop क्या करेगा, अगर आप देखोगे git stash लिस्ट को, तो अभी यहाँ पे 3 है, राइट, और मैं मार रहा हूँ git stash pop. So tell me what happened, and now I will do git stash list. क्या हुआ, प्लीज स्पीक अप गाइस, क्या हुआ, ऑब्जर्वेशन बताओ. सर रिजर्व्ड वाला वो नहीं. हाँ, पॉप ने क्या किया, लिस्ट जो भी लिस्ट मेंटेन किया उसमें से निकाल के अप्लाई किया, है ना. सो आई विल लूज माय स्टैश एड्रेस ना. once it is applied, I am going to lose. If I am not using it now, say मैं इसको यूज नहीं करता, जो मेरा रिवर्स वेरिएबल वाला चेंजेस था, तो जो सबसे टॉप में था
राइट, एक 0th इंडेक्स था, उसको उठा के उसने अप्लाई कर दिया, एंड मूवमेंट हुआ, जो फर्स्ट इंडेक्स में था वो 0 पे चला गया, जो सेकंड इंडेक्स में था वो 1 पे आ गया, बट आई लॉस्ट दैट एड्रेस, है ना। अप्लाई तो हो गया, अभी अगर मैं cat calc.py करूंगा तो आई कैन सी, राइट, वो y प्लस एक्स आ गया। लेकिन अगर मान लो मैं इसको यूज नहीं करना चाहता और मैं गिट चेकआउट करता हूँ, तो ऑब्वियसली आई विल लूज दिस चेंज, राइट, फॉर श्योर, हट जाएगा, फिर मैं वापस से, राइट, ये कोड नहीं देख पाऊंगा y प्लस एक्स वाला। गॉट माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग? Yes. यस और नो? Yes. Very good. Okay, let's, right, move out. Now another few commands, right, say after applying, say you have maintained a long list of git stashes, right, and you want to clean up them, right, सबको आपको क्या करना है, क्लियर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, git stash क्लियर करना कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबको उड़ा देगा। लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक को हटाना है, जैसे कि मान लो मैं अभी कैट करके देखता हूँ मेरा क्या कोड चेंज है, ठीक है, ये मैं एक बार vi करके एक और कर देता हूँ, सो दैट क्लियर और वो आपको एक साथ समझ में आए। तो पहले हम calc.py करते हैं, और यहाँ पे मैं एक नया चेंज डाल देता हूँ, तो x प्लस वाई, राइट, से प्लस m, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ m इक्वल टू सम पोजिशनल पैरामीटर, कुछ ऐसा चेंज डाल दिया, ठीक है। अभी मैंने सेव किया और git stash सेव मारा, ओके, मैंने ऐसा कुछ डाल दिया यूजिंग पोजिशनल डिफॉल्ट पैरामीटर। तो मेरा अभी कितने स्टैश हो गए वापस से, 3 हो गए, है ना। अभी मेरे को चाहिए नहीं, आई डोंट वांट द थर्ड वेरिएबल वाला, बाकी मुझे चाहिए, मुझे थर्ड वेरिएबल वाला नहीं चाहिए जो स्टैश 1 इंडेक्स में। आई कैन यूज अ कमांड कॉल्ड git stash drop. I can write directly drop if I don't want, right, from my list of stashes I can copy it and drop this particular address, okay. And if I do git stash list, you can see, right, I don't have any that one, right, that has been removed. Drop for specific, and if I do git stash clear, it will do what, clean up All the stashes, right, जो भी है उसको कर देगा। Now if I do git stash list, nothing is there, okay. So this is the purpose of stash. तो मैंने आपको एक ये सिचुएशन दिया, और भी बहुत सारे सिचुएशन हो सकते हैं। एक सिचुएशन ये हो सकता है, आपने कोड किया और बहुत कुछ मैसअप कर दिया, ठीक है, मतलब इधर उधर कुछ कोड किया है, बट यू डोंट वांट टू लूज द कोड आल्सो, मतलब आपने किया तो है मैसअप, बट आप कोड को कहीं पे सेव करके रखना चाहते हो मेमोरी पे, और वापस से कोड लिखना चाहते हो जो भी है, राइट, वापस से फ्रेश क्लीन स्टेट से कोड लिखना चाहते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो आप क्या कर सकते हो, गिट स्टैश करके आप अपना जो भी लिखा हुआ कोड है वो स्टैश मेमोरी में डाल सकते हो, और अपना वापस से कोड कर सकते हो, और रेफरेंस ले सकते हो बार बार उस, राइट, स्टैश में जाके, यहाँ मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा था, वहां से वो कोड उठा के आप डाल सकते हो। यू गॉट माई पॉइंट, मैं क्या बोल रहा हूँ ये? yes. तो यहाँ पे ये काम आता है सब चीजें, ठीक है। So this is what git stash is. Sir, git stash apply. That means if we want to continue working where we had left our work, then No, it. not necessary, not necessary. मतलब अप्लाई कर रहे हो आप दिखाने के लिए किसी को, है ना, या अप्लाई कर रहे हो आप अपना कोड रेफरेंस लेने के लिए कि भाई ये मैंने इस फाइल पे ये चेंजेस किए थे, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या था, आपने वो उठा लिया। अगर आपको लग रहा है कि अप्लाई करने के बाद आपको लग रहा है कि मेरा जो कोड है वो सही है, एंड यू वांट टू कंटिन्यू, देन यू कैन स्टार्ट डायरेक्टली वर्किंग ऑन दैट स्टेज, लाइक गिट ऐड, राइट, कमिट, उस जगह पे आप करना स्टार्ट कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो यूज होना शुरू हो जाएगा। Okay, so that is used to bring back the save changes onto our current working directory, right? करेक्ट, So इट्स this, ट्रू। I have a question here, like systems are getting saved in local repository. So how can we show, I mean, to other people, like suppose I want to see these changes. So सो ऑब्वियसली जो आपने अलग अलग एल्गोरिदम्स या जो भी अलग अलग चेंजेस डाले हैं, स्टैश बनाया है, तो हर बार अप्लाई करो, राइट, okay, दिखाओ,
and then git checkout करके original state पे चले जाओ, so that again you can go back right to state and then apply again, जो मैंने किया 2 बार, है ना? Okay. In that way, right, you can show them, and once one of them is finalized, right, just apply that, right, and use that, and then after right committing the changes and everything, so that it comes to your actual right branch working right direct branch, and then you can remove all the other stashes that right you have, right, you can clean them up either using drop or either using clear. ओनली थिंग देखो यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं, किस स्टेज में करें, जहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, अगर मैंने ऐड कर दिया तो मैंने फाइनल किया ना मेरा चेंजेस, गिट ऐड कमांड रन किया मैंने कहीं पे भी मॉडिफाई करने के बाद, नहीं किया ना, मैं गिट ऐड तब करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ भाई ये कोड जो मैंने लिखा है सही लिखा है। आपका मॉडिफिकेशन राइट जब तक ट्रैकिंग स्टेज में रहता है तब तक आप उसको क्या कर सकते हो, स्टैश कर सकते हो। अगर आप उसको स्टेजिंग स्टेज पे ले जाओगे तो ऑब्वियसली जब भी आप कुछ चेंज करोगे तो स्टेजिंग स्टेज से ही वो क्या लेगा, स्टैश लेगा ना। यू अंडरस्टूड माय पॉइंट राइट, व्हाट आई मीन टू से, इसलिए मैंने कहीं पे भी ऐड नहीं किया, राइट, जो मेरे चेंजेस किए वो ट्रैकिंग स्टेज पे थे, करेक्ट। Okay. Okay, so I'm done for today's session. Now, also you have also a good time, right, to do all this, right, git stuff lab, because now the things will move, right. We are going to a programmatic mode from next session. सो पाइथन पे जा रहे हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा, पाइथन हम फंडामेंटल्स कर रहे हैं, बट येस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट एंड डाटा स्ट्रक्चर, राइट, एंड मेथड्स एंड फंक्शन, एंड इन बिटवीन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड राइट कंडीशंस, लूप्स, राइट, while learning, right, the object and data structures, inbuilt functions and methods, तो उस समय हम वो सब यूज करने वाले हैं। So be prepared, I would say, right, explore if you are very new to Python, if you are aware of Python then it's good, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आओ, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, लाइक आई विल थिंक लाइक यू डोंट नो पाइथन, सो इन दैट वे आई विल हैव टू स्टार्ट, ओके। ओके, आफ्टर पाइथन क्या लेने वाले हो? आज पाइथन नहीं हो रहा है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन से ही होगा, फ्रेश सेशन से होगा, बट अगर आपको कुछ चीज़ें सेटअप करनी है या करनी है तो आप कर सकते हो, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट जो आपके यूबुंटू सिस्टम या आप अगर EC2 इंस्टेंसेस पे करना चाहते हो तो बाय डिफॉल्ट उस पे क्या है, पाइथन रहता है, अगर नहीं है तो दिस आर द कमांड दैट यू कैन रन टू इंस्टॉल sudo opt, राइट, इंस्टॉल, एंड वी विल बी यूजिंग पाइथन 3, ओके, इंस्टॉल पाइथन 3, राइट, ये कमांड आप यूबुंटू के लिए मार सकते हैं, एंड जब आपको अगर रेड हैट इंस्टेंस में करना है किसी, तो आप यहाँ पे यम मार सकते हैं, और अगर आपको आपके विंडोज मशीन पे ही सेटअप करना है तो गो टू python.org, और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके आपके विंडोज 64 बिट का इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन वेरी इजी, इट्स जस्ट लाइक इंस्टॉलिंग एनी अदर सॉफ्टवेयर। तो ये डाउनलोड्स में जाओ, जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप उठा सकते हो, राइट, ये डाउनलोड करो, ठीक है, डाउनलोड करके आपका जो विंडोज़ का राइट MSI फाइल होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, आप उसको क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मेरे को tar.z है, अगर आपको स्पेसिफिक डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आप नीचे जा सकते हो, तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीज वो भी मिल सकता है, अब उसके रिलीज में जाके उसका MSI फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 3.9.4 पे गया, ठीक है, और यहाँ पे ये फाइल्स हैं, राइट, यहाँ पे आपको देखो विंडोज़ इंस्टॉलर मिल जाएगा आपको 64 बिट वाला, इस पे क्लिक करके आप इससे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो बस आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट 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 करना है। रिमेंबर एक जगह पे पाथ सेट करने के लिए आता है, आप वहाँ पे आपका पाथ राइट सेट कर सकते हो, मतलब पाथ बाद में भी सेट कर सकते हो, बट वहाँ पे एक ऑप्शन आता है चेक करके, तो आपके विंडोज के इन्वायरमेंट वेरिएबल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पे वो पाथ सेट कर देता है, सो दैट इफ यू वांट टू रन योर फाइल either from a command line or from any other ID, right, that path is right generally configured. और those who want to use नोटबुक अगर आपको यूज करना है जुपिटर नोटबुक, तो उसके लिए आपको एनाकोंडा पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैं आपको दे दूंगा, बट इनिशियली आई विल डोंट वांट यू टू गेट इनटू राइट दोस स्टफ,
पहले आप हम बेसिक सेट करेंगे, देन वी कैन गो टू राइट आईडीज एंड ऑल दैट। तो जब आप थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे कि आपको यस आई कैन डू राइट कोडिंग इन पाइथन, जब वो इंटरेस्ट आना शुरू होगा अपने आप ही आप ये सब चीज़ों में घुसना शुरू करोगे, राइट। यू विल स्टार्ट यूजिंग एनी आईडी लाइक पाइचार्म और राइट इंटेलिजे, राइट, और Sublime. notebook. Nice. Yes, Visual Studio, many editors out there, right? So this is right as per your but I would definitely say take most from the Python lecture because it will look good in every DevOps resume, right? Where whatever it is, right? आप Windows environment पे आप अपना प्रोफाइल बनाना चाहते हो या Unix environment पे बनाना चाहते हो, right? क्लाउड डेवऑप्स में आप बनाना चाह रहे हो, कहीं भी बनाना चाह रहे हो, वहाँ पे पाइथन का तो आपको दिखाना ही है। और उस पर नॉलेज गैदर करो जितना अच्छा कर सकते हो, आपको फायदा ही फायदा होगा उससे, ठीक है। ओके गाइस, तो हम लोग मिलते हैं Sir, नेक्स्ट सेशन ऑन दीपक, पाइथन। यस I प्लीज have just विशाल। one question. राजीव, या एक मिनट आपका टर्मिनल ओपन करो ना। ओके क्या जस्ट मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि मिस अपने कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इससे हमारा टाइम भी कभी कभी प्रोग्रामिंग शेल प्रोग्रामिंग में काम भी आता है। जैसे हमने अभी मल्टीपल डायरेक्टरीज क्रिएट किए थे ना, तो उसके लिए कमांड है mkdir ओके स्पेस d डी ओपनिंग करली ब्रेसेस, आफ्टर स्पेस नो कंटिन्यू, ओके कर्ली ब्रेसेस ओके 1 वन 2 हाँ वन डॉट 10 yes we can use this करली क्लोज करली ब्रेसेस, नो करली ब्रेसेस, okay curly braces it will yeah create 10 directed correct d1 to d10. good one. So basically this is range, right? With dot right, this range Yes, which is associated with this string, right? D, we which can is also create file with touch also. touch also, correct. And there is also one option called mkdir minus p, right? Which is used for what? Yes, Anyone? -p, subdirectory, So directory if under you want to subdirectory. create right multiple Directory directories hierarchy. at a time, right? Directory hierarchy you can use, for example, say tilde, right? m1 slash m2, right? Inside this also you can use right curly braces, right? If you want to create subdirectories within right a main directory, you want to multiple right folders you want to create, right? So Yes, you can write create c1 comma c2, right? And then say you want to create another directory, right? So in this way also, right, you can do the stuff. So yeah, good. Thanks Vishal for right, giving this Sir, I good have idea. just one question. Yes Rajiv. Sir, git stash drop, that means it will remove Only one la only one address which you are specifying to it drop. So so it will git, remove the last edit stash also, or any specific stash? so see basically when you use pop, right, it takes the top. Drop needs what? An address to be specified, right? Git stash drop and the address of the stash. Okay, okay. So it will remove, yeah, both. We can remove both last edit or any specific stash, right? So generally right any specific, Okay, 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 because pop is doing right the top one. okay. Yes, yes. and with clear all, right? Clear all, yeah. Okay guys, thank you. So I will share this video right after some time today. So I would say right now do whatever right we have done, right? उसका practice करो. अगर आप lag कर रहे हो तो ये week में right कोशिश करो कि वो जितने भी labs वगैरह हैं जो भी किया है right, please do that. तो कि आपका बैकलॉग ज़्यादा बना ना रहे, नहीं तो बैकलॉग बना रहेगा क्योंकि आगे जो चीज़ें आएंगी अभी जेंकिंस मैवन के प्रोजेक्ट्स जो आएंगे राइट, दैट वुड बी रियली वेरी हैवी, राइट? हैवी इन द सेंस व्हाट, उसमें टाइम लगेगा, आपको करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा एफर्ट डाल के करना पड़ेगा। जैसे मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है, मैवन नेक्सस इंटीग्रेशन आएगा, तो ये सब अपने आप में राइट आप अगर आप पहली बार कर रहे हो तो हो सकता है आधा घंटे का राइट, आधा घंटे का एफर्ट अगर आपको तो अच्छा खासा पता है, अगर नहीं कहीं फंस गए तो 1 घंटा भी लग सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कितना टाइम
लगेगा, बट अभी आप पहले के बैकलॉग को मतलब कर लो इस वीक में, सो दैट आगे आपके लिए इजी रहे। ओके सर जिनको मतलब पाइथन कोडिंग जिनका नहीं है, तो जो हम बेसिक से करेंगे तो वो एडवांस लेवल तक या इंटरमीडिएट? सो मैं अभी बहुत ही फंडामेंटल, नॉट इवन राइट इंटरमीडिएट लेवल पे भी आपको लेके जाने का सोच ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं उस लेवल पे लेके जा रहा हूँ कि जो आपके डे टू डे एक्टिविटी में आपको काम आए, जैसे कि आप कोड को देख सको, एग्जीक्यूट कर सको, लिख सको कुछ चीजें, राइट। आप पाइथन के इजीनेस को समझ के उसका यूज कर सको, मेथड्स लिख सको, राइट, आप फंक्शंस लिख सको, उस लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है, कि आप ये जो छोटे मोटे ऑटोमेशन है, राइट, वो कर पाओ। इंटरमीडिएट मतलब आपको उसके अलावा जो लॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं कुछ, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और अदर थिंग्स, राइट, कम्स इन फंक्शन में भी बहुत सारी चीजें हैं, राइट। फंक्शन में जो हम करते हैं उसमें फिर बाद में डेकोरेटर, ये एनोटेशंस, देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, और बहुत कुछ आ जाता है, वो सब आ जाता है आपके इंटरमीडिएट टू राइट एडवांस लेवल पे। बट वी नीड टू बी मोर ऑन द फंक्शनल साइड, मतलब फंक्शनल प्रोग्रामिंग लेवल नॉलेज होना चाहिए, राइट, जहाँ पे हम फंक्शंस लिख के, राइट, कोड को ऑटोमेट कर सकें, उतना तो लेके आना है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक्स, राइट, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, आई वुड से, ओनली थिंग, राइट, योर इंटरेस्ट वुड मैटर। ओके okay then, thank you guys, bye, have a great day. Thanks, bye. Thank you, Deepak. Thank you. Thank you, Deepak.